किया था, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल डंप हो गई थी और आफ्टर 129 ईयर्स ये रीओपन की गई है, इसकी रिनोवेशन की गई है। और एक और बात बताती चलूँ जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज KPK ने इसको रिनोवेट किया है और रिवाइव किया है। और ये हमारा बहुत अच्छा एक एसेट है जो कि हमें बहुत इसको कंजर्व करना है, जो हमें इसको संभाल के रखना है। सो लेट्स सी, मैं आपको विजिट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने 29 अक्टूबर 2020 को इसको रिवाइव किया है और रीओपन कर दिया गया है और इको टूरिज़्म को बहुत सपोर्ट कर रही है। ये बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इसकी वीडियो मैं आपको पोस्ट करूँगी। बाय। एंड हो गई है यहाँ पर। Monkeys are sitting here. Wow. We should conserve our wildlife. Hey. One more. And the other one is here. It's not mandatory कि आप मोटो टनल हाइक करके ही आए। ये इसका रोड ट्रैक भी है जो कि बहुत रशी है, बहुत डस्टी है, बहुत ब्लूटेड है। इनफैक्ट जो हाइक नहीं करना चाहते, जो एडवेंचरस, इनफैक्ट ये भी एक एडवेंचर है कि आप यहाँ तक आते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे आते हैं। होप सो गाइस आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, इट्स टाइम टू गो बैक। सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।